हेलो यूट्यूब, दिस इज़ योर होस्ट विनायक एंड यू आर वाचिंग वीकली विनायक। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही कम बातें हुई हैं और हम बिहार से ही हैं, इसीलिए हम इसके बारे में आज बात कर रहे हैं। तो मोटे मोटे थोड़े बात पहले ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जो प्रॉब्लम्स किन किन सेक्टर में लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड लेक ऑफ मार्केट ओरिएंटेड कोर्स है। द स्किल्स आर नॉट ओरिएंटेड फॉर मार्केट पर्पस and the spending is biased toward current expenditure rather than meeting development goals of the organization or institute. So let's make a start with a video. इस वीडियो में हम 4 मेजर पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत सारे सब हेड्स आएंगे। पहला है एक्सेसिबिलिटी इशू, दूसरा है इक्विटी इशू, तीसरा है लेक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड द फोर्थ वन इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो चलिए सबसे पहला वाला हम देखते हैं। तो लेक ऑफ एक्सेसिबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट है द ग्रोथ इन एजुकेशन सिस्टम इज नॉट विजिबल। जो एजुकेशन एज एन इंडस्ट्री इज नॉट वेल equipped and that industry is not capable. Second one is the districts are not matched according to quality and all districts do not provide equal level of education. Third one is lack of number of institute, general and technical institute in your area or in your state. वो भी विजिबल है कि स्टार्क डिस्पैरिटी है नंबर ऑफ कॉलेजेस रिक्वायर्ड में एंड नंबर ऑफ कॉलेजेस प्रेजेंटेड इन योर एरिया और प्रेजेंट इन योर स्टेट। लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट विच इज लेक ऑफ इक्विटी एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज अ सोसाइटी। इशू रिलेटेड टू इक्विटी में हम बात करेंगे डिफरेंट सोशल ग्रुप की। तो सबसे पहला सोशल ग्रुप है हमारा वीमेन। The participation of women in the education system is not that much as compared to men, which is a serious issue because women is a homemaker. Also, this is 2020, and we ought to give the women their due credit for the work they did for us. So next social group is socially backward groups is the backward classes or backward caste such as SC and STs and other backward classes. So the participation of these sectors are also low in our education system. The third point is very stark. There is a wide in rural and urban disparity. तो जो आपकी एजुकेशन सिस्टम गांव में है और जो शहर में है उसमें बहुत फ़र्क है, और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार लिव्स इन विलेजेस। सो विलेजेस में ज़्यादा आदमी है और उनको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेक्शन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्वालिटी एंड रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर बहुत सारे सब हेड्स हैं और इसको अच्छी से पढ़ना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हायर एजुकेशन ही वो आखिरी पड़ाव है जिसके बाद हम अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। सो सबसे पहली चीज़ जो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो छोटी सी बात मैं बता दूँ। द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जो इन बिहार is very low as compared to other states and they lack the market oriented skill. I'm not saying they are not intelligent, they are intelligent, but they lack the market oriented skill they need to compete in the modern world. सबसे पहला पॉइंट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्रीडिटेशन स्टेटस, जिसका मीन्स होता है ड्यू क्रेडिट और रिकॉग्निशन देना एक इंस्टीट्यूट को। सो दिस इज नॉट प्रेजेंट इन बिहार। Very stark number of colleges are there which apply for recognition in UGC and they don't apply because they are not able to fulfill the criteria. So this is a major point. If you are providing education in which the colleges or universities are duly recognized, so people will want to study in your institute. इसमें एक बात और हम ऐड करना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ ब्रांड्स की कमी है। जो एजुकेशन में मेजर ब्रांड्स हैं जिनकी बहुत अच्छी रिकॉग्निशन है वो आपके यहाँ मौजूद नहीं है। Second point in this is
UGC grant. So very low number of colleges are there which are fulfilling the criteria for taking a grant from UGC. UGC, as we all know, is an organization which work in a higher education system. It provide due recognition and also funding to the colleges, and also recommendation to the government about the funds and needs of the colleges. So very low number of colleges are eligible to apply for the UGC grant. So our next point is number of faculty and the quality of faculty. A major number of posts are not filled, and the which are filled are not fit for teaching us in the competitive environment. Next one is lack of infrastructure facility. Some of the colleges or schools even lack the minimum basic amenities like a good infrastructure related to building and toilets. Also, if the infrastructure is present, they are not accessible. We have seen in many colleges there are computer room, but they are not accessible to the students. The next major point is irregular courses, and the number of working days are not thoroughly utilized. In many colleges in Bihar, there is disruption in study and working days of colleges cause of many issues such as political and the social issues, such as many antisocial elements presented in the campus. So due to which the working days are not thoroughly utilized, and this is a matter of great concern for us. The next point is outdated syllabus. The syllabus in which is applied in your colleges and institute are not up to the mark to meet the current competitive environment. So you need to update your syllabus to provide your student the market skill they require in the living condition of the world. The next one is the flawed examination system. In this we are this does not only apply to Bihar but to all over India. In India, we have seen that the emphasis is laid on the मगिंग पावर. आपको याद करने के लिए कहा जाता है ज़्यादा, और आपकी एनालिटिकल और थिंकिंग को डेवलप नहीं किया जाता है. सो दिस इज़ अ मेजर ड्रॉबैक फॉर अस. So students should and colleges also, student and colleges try to introduce some courses such as which is analytical and not mugging power. अब हम आ गए अपने सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पे जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में. सो एजुकेशन एज अ सेक्टर ऑल्सो कम्पीट्स विद अदर सेक्टर. जो आपके अदर सेक्टर हैं सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए एंड सोशल स्कीम्स, the education sector competes for allocation of funds. So there is a serious question mark on the expenditure pattern of the Bihar government since last 40 to 50 years, cause there is no visible growth of education. So first point is inadequacy of expenditure in the technical and higher education. There is a deficit of budget and you don't have enough budget to spend on your education system in higher and technical education. The second part is very important for us students, the lack of quality technical education, due to which the student go out of the state in desperation and they have to spend more in residence. The third and the last part is there is no growth in the education sector since the last 40 years, which you can see when you will see the graph of expenditure in government sector. Also the per capita or per student expenditure is also very low in comparison to other states. That's all for today. Please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. I also know that the videos are not coming thoroughly, but they will come. Please support me guys. I need your support. Thanks.